Hello everyone, welcome to the world of कारीगरी only on our channel देसी कारीगर। हम हमारी नई सीरीज के सेकंड चैप्टर को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। यदि आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर वुडन डाई का फोटो फ्रेम अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। फोटो फ्रेम बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक कार्डबोर्ड, ग्लू, वुडन पाउडर, स्टोन, वुडन पॉलिश और सैंड की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फ़ोटो के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड को कट कर लेना है और फ्रेम बना लेना है। अब फ्रेम के अकॉर्डिंग इसके पीछे का हिस्सा भी कट कर लेना है। अब फ्रेम के फ्रंट पोर्शन को व्हाइट पेपर से कवर कर लेना है। इस वीडियो में हम फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। सैंड का यूज़ करके स्टोन के बीच के गैप को फिल करते हैं। फ्रेम को फाइनल टचअप देने के लिए हम वुडन पॉलिश का यूज़ कर रहे हैं।
फ्रेम के पिछले हिस्से को सपोर्ट देने के लिए हम कार्डबोर्ड की पट्टियों का यूज़ कर रहे हैं। फिर इस हिस्से पर फ्रेम को फिक्स कर लेना है। फ्रेम को वुडन लुक देने के लिए इस पर हम वुडन पाउडर को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में फेविकॉल, वाटर और वुडन पाउडर को मिक्स करके पेस्ट बना लेते हैं और इस पेस्ट को फ्रेम पर अप्लाई करते हैं। फ्रेम सूखने के बाद फाइनल टचअप के लिए हम वुडन पॉलिश का यूज़ करते हैं। फाइनली हमारा फोटो फ्रेम रेडी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।